आगे सर स्टार्टिंग से दोबारा से ठीक है दोबारा से इंट्रोडक्शन फिर से स्टार्ट कर Okay. Good morning, everyone. I'm Dr. Ayush Khetarpal, consultant urologist at Apollo Spectra Hospital, Karol Bagh, New Delhi. Today, we'll be talking about the urinary tract stones. This video is all about the patient awareness. Uh, Let me just introduce to you about the urinary tract. Urinary tract is it basically comprises of the kidneys, ureters, bladder, and the urethra. Over here, the kidneys they produce the urine as a result of filtering blood, which circulates inside the body. So, and this urine is basically drained from the kidney and to the ureter, and from the ureter to the which is stored in the bladder, and ultimately passed out through the urethra. So, what is a kidney stone? Kidney stone is basically they're small masses which are basically formed basically formed of salts and minerals found in the urine. The prevalence it is more of a India falls in the so-called stone belt which is about 12% of the which have the kidney stones. The rising incidence it is basically because of the dietary patterns and the weight gain. About 12% of the population is expected to have kidney stones. Of course, the stone belt in India is Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Punjab, and Delhi. One of the major problems with kidney stones is because it has a high rate of recurrence, often at an initial stage, and when about 50% of it has a 50% chance of forming second stones within 7 years of untreated stones. So the type of stones, there are basically four types of stones: cysteines, calcium oxalate, calcium stones, uh, uric acid stones, steroid stones. So the most common stones are basically calcium oxalate stones. The second most common is uric acid, phosphate, and steroid and cysteine. Normally, when the patient comes to our OPD, they suffer from lumbar pain or the lower pain relating to the back, difficulty in passing urine, hematuria, or I would say blood in the urine. These are the basic symptoms when the patient comes with. They can also be silent stones, which the patient may go untreated. Again, whatever I said: pain, nausea, vomiting, blood in urine, infection, fever, sepsis, sometimes urgency, strangulating, and these all things can lead to chronic kidney disease or maybe sepsis. So now, how will I know that I have a kidney stone? To diagnose a stone, the patient when it comes to the OPD, he presents with difficulty in passing urine, having pain. We need to examine the patient. We need to do a physical examination as well as some routine blood tests, urine examination, and ultrasound and so on. We also need to do. I mean, if a stone is detected on the ultrasound, we may go for an IVP or a CT scan uh, to locate the stone position of the stone as well as the size of the stone. The treatment options what we have initially for small stones, for small stones normally we give opioids or NSAIDs, some antispasmodic pains to relieve the pain. We go for medical expression therapy in case of alpha blockers, uh, which are having a duration of I would say 7 to 10 days, and along with that we treat the comorbidities of the patient, and then the other non invasive management can go as a ESWL. If the stone is located in the ureter, we go for a URS, we may go for an RARS. For a larger bulk of stones, we go for PCNLs, which can be, if the stone is in any of the calyces or maybe in the renal pelvis, we go for PCNL. Then, for the uncommon surgeries which we perform for renal stones, depending upon the size and the location of the stone, we can also go for an open or laparoscopic surgery. So now, what can I do to prevent renal stones? The most and the foremost important thing is drink a lot of water.
at least 2 to 3 liters of water in a day. If you have a cystine stone, you of course you have to drink more water. And your fluid intake should be high. There should be low salt intake, low animal protein. You should limit your you should limit your oxalate intake. You should lower your body weight and specific treatment for metabolic abnormalities. A diet which is diet changes, it should like it should eat fewer oxalate rich stones, which if you wish to form oxalate stone, then your doctor recommends mainly restricting the foods rich in oxalates, which includes of course beetroots, akra, spinach, sweet potatoes, nuts, chocolates and tea. And इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है, पेशेंट का डाइटरी पेशेंट की डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पेशेंट से पूछना, पेशेंट को बताना कि किस हिसाब से हमें डाइट लेनी है, किस समय पे हमें स्टोन्स के लिए हमें बताना है। पेशेंट की सर्जरी किस समय होनी है, किस समय नहीं होनी है, मेडिकल एक्सपेक्टेशन रेट, and when the surgery is required, when the surgery is not required, these all things have to be there. The most commonly asked questions जो हमारे ओपीडीज में हमें मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा यही आता है कि पेशेंट जब हमसे पूछता है कि सर हमारा स्टोन बहुत छोटा है, क्या हमें निकलवाने की ज़रूरत है? हम सबको मना कर देते हैं कि नहीं, अगर स्टोन बहुत छोटा है, पेशेंट सिर्फ कई बार सिर्फ विद द हेल्प ऑफ मेडिकल एक्सप्रेशन थेरेपी, पानी पी के, कुछ मेडिसिन लेके भी स्टोन्स को निकल सकते हैं। बट अगर स्टोन अगर बहुत बड़ा है, मे बी about more than 8 to 10 mm, we may need to go for surgery as well. Depending on the size, depending on the location, we may go for different surgeries. And बहुत और अलग अलग प्रकार की सर्जरीज जैसे इसमें होती हैं, URS, PCNL, RERS. The nowadays सबसे ज़्यादा जो new thing is ECIRS, that is PCNL plus RERS, which can be there. इस सेशन में मैं आपसे कुछ सवाल आपकी जैसे जो बेसिक आपकी जो सवाल है वो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, तो वो आपसे मैं आपके आंसर करने के लिए बैठा हूँ। मैं जो बेसिक सवाल जैसे जितने भी आते हैं। जी जी Sir, what is the most common urine problem? पेशेंट whenever comes, उनको डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन और वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन, जब किसी को पेशाब में दिक्कत आ रही है, पेशाब करते समय दिक्कत आ रही है, कोई कहता है कि सर मुझे बहुत पेन हो रहा है यूरिन पास करते वक्त, जिसको हम अपनी मेडिकल भाषा में इसको डिसीवियर कहते हैं। कभी कभार पेशेंट को माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया भी होता है। माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया मींस पेशाब में उसको लगता है कि उसको ब्लड नहीं आ रहा, लेकिन उसको पेशाब का जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसको उसमें खून भी आ रहा होता है। तो ये इन सब दिक्कतों में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को यूरिन में दिक्कत आ रही है। और इसके साथ साथ कई बार पेशेंट को लगता है कि नहीं, उसको यूरिन में जलन हो रही है, पेशाब करते हुए अपना जो है दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, इन सब चीजों को कहते हैं। What are the some common problem in the urine system? सबसे कॉमन जो है बिकॉज ऑफ दी स्टोन्स की वजह से ज्यादातर पेशेंट्स को, कई बार पेशेंट्स को यूटीआई, फीवर, इन सब की चीजें होती हैं। पेशेंट्स को लगता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पेशाब करते हुए दर्द हो रहा है, पेशाब करते हुए पीछे कमर में दर्द हो रहा है, इन सब चीज़ों में हमें दिखता है। सर व्हाट इज UTI? UTI इज बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब में जब होता है, जब भी हम देखते हैं पेशाब में जलन होना, या पेशाब में कभी जब पेशाब का टेस्ट कराते हैं तो उसमें प्रेजेंस ऑफ पस सेल्स इन द यूरिन इज कॉल्ड UTI। अगर हमारी यूरिन टेस्ट में हमारे अगर पस सेल्स आ रहे हैं, तो पस सेल्स के साथ साथ हम लोग नॉर्मली इसमें हम कल्चर कराते हैं। तो कल्चर कराते में पता चलता है कि अपना उसको कोई ग्रोथ तो नहीं है, कुछ नहीं है, इस हिसाब से आगे पता चलता है। Sir, what are the 7 functions of the urine system? Functions of the urine system, the most and foremost function of the urine system is filtration of the blood. तो इसमें जितना भी है हमारा ब्लड को फिल्टर करके उसे यूरिन, जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिन हमारा उसमें से निकल, यूरिन इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द यूरिन ट्रैक्ट। Sir, what is factor affect urine volume? Normally the urine volume in a day, it is around
1000 to 1500 ml. The urine protein is about 1000 to 1500 ml. And what type of problem most common? The most common problems when the patient has is again in case of urinary tract, it is pain in the loin regions, or I would say pain in the lumbar regions, uh, difficulty in passing urine, frequency, urgency, nocturia, weak stream, difficulty in passing urine, feeling of incomplete voiding, hesitancy, intermittency. And so, what food is prevent UTI? नॉर्मली हम कोई भी पेशेंट का अगर यूटीआई होता है, हम सबको यही बोलते हैं कि आपको पानी खूब पीना चाहिए, कम से कम दिन में 2 से 3 लीटर का आपको पानी आपको जरूर पीना चाहिए। पानी जितना पियेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। और जितने भी ऑक्सीडेटिव स्टोन, ऑक्सीडेटिव जितने भी आपके फ्रूट्स हैं सबको अपना कम करना है, सॉल्ट इंटेक आपका कम करना है, एनिमल प्रोटीन आपको कम करना है। क्रैनबेरी जूस आपका, क्रैनबेरी डी मेनोस, ये एक अच्छे ये एक अच्छा है अपना, जिससे आप अपना अपना आपका यूटीआई को जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। And sir, what is the best position of empty your bladder? सॉरी, कम अगेन। What is the best position to empty your bladder? The best position to empty your bladder is in a sitting position. कई लोग जो हैं हमारे जो प्रिवेंटिव टाइम्स में, अगर बैठ के जब कोई इंसान पेशाब करता है तो वो सबसे आसान है, उसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है आराम से एम्प्टी हो सकता है। स्टैंडिंग पोजीशन में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट सिटिंग पोजीशन इट इज बेटर। Sir, what is food are good for urine tract? जैसे मैंने पहले आपको बताया, हाई वॉल्यूम इनटेक ऑफ वाटर, क्रैनबेरी, इस लो लो सॉल्ट इनटेक, लो एनिमल प्रोटीन्स, जितने भी अपने बीज वाली जितनी भी आपकी चीज़ें हैं इन सबको हमें कम करना चाहिए। जैसे टमाटर हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, सब हमें कम करना चाहिए। Thank you so much everyone for the wonderful session. We'll meet you again.